फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। मैं आनंद नरसिम्हन और हमेशा की तरह क्रिकेट पर बात करने के लिए मैं आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दैट दिस इज द ईव ऑफ द बिग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द एशिया कप। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Let's go straight across to our guests and let's get them talking. I have Chetan Narula also with us at this point. So CNC, let's talk about cricket. And that too at a time where we are actually wondering कि भाई हमारा प्लेइंग 11 कल क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं that these are the records. अब we've got the record, so let's look at the record. Playing record as far as Asia Cup is concerned. This is what Asia Cup records are: 7 India, 5 Pakistan. India's lost, and that's the numbers. So 7-5 पर हमारे पास एडवांटेज है. बट चैतन्य, मेरा प्रश्न रोहित शर्मा की अगर बात को सुने, रोहित शर्मा कहते हैं कि अगले 2 से 2.5 महीने इंपॉर्टेंट हैं. He's also said that we've got to work at short-term goals. And he's also very clearly said that we don't have in our nets bowlers of the quality of Shaheen, Afridi, Wasim and Rauf. But we'll do the best to counter them. एंड ही सेज पाकिस्तान में हमेशा अच्छे बॉलर रहे, ऐसा नहीं है, पर लेकिन हमने पाकिस्तान के बॉलरों को ही सब जगह मारा भी है, कूट कूट के मारा भी है, विकेटें भी उन्होंने लिए तो हमने मारा भी है. यहाँ क्रक्स ये है कि हमारी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी कि हमारी माइंडसेट क्या है. तो हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए. लेट्स गेट देयर. आई थिंक देखिए, अगर श्रेयस फिट है तो श्रेयस को खिलाना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि तिलक वर्मा को लेके गए हैं तो शायद उनको टीम में लेके आए. तो मुझे लगता है अगर श्रेयस फिट है तो उनको पहले नॉट मिलनी चाहिए. केएल राहुल, हमें पता है कि केएल राहुल विल नॉट बी देयर, सो उसकी जगह ईशान किशन खेलने ही वाला है. जैसे कि प्रोबेबल वर्सेस पाकिस्तान जो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव and Jasprit Bumrah. Okay, so here we are going with Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj and Shardul Thakur, which is like Shardul can be a good choice in this wicket because wickets are slow. As we have seen, sticky है wicket, वहाँ पे ball slower one काफी काम कर सकता है. Hardik can also be a good option, but I think this is for me right team. With this team we can go, and we should play with this team. And yes, there will be just a little bit of confusion about opening, and I think we will talk about it as the show goes. But for me, but for me, this team looks good because we have two spinning all-rounders, and Shardul comes in as a who can bowl a lot of slower ones and pitch in, and Hardik is also not very quick. So I think this looks like a stable side with a lot of batting down the. So is this a positive mindset, Chetan? Let me ask you, if this is the construct of the team, if this is the construct of the playing 11, are we going in with a positive mindset and a settled head? If you look at Rohit Sharma, Rahul Dravid's approach, if this is the 11, I think this is. Sorry, Chetan, you go on, please. Yeah. First of all, is this the batting order that we are going in? I don't think that is the batting order, and no, playing 11. Batting order. We'll talk about playing 11. I'm saying. Yeah, playing 11. This is fine, but only if it's a full game. If it's not a full game, if it's a truncated game, I think I would prefer Akshar Patel over Shardul Thakur because the pitches are as it is slow, and truncated game में क्या होगा? You're playing fewer overs, and with Shardul, yes, he can bowl those off cutters and everything. Like he'll also put pace on the ball. Yeah, Pace on the ball. Pace on the ball, then then you can hit him as well. Or truncated game में you'll already have Hardik, you'll have Siraj, you'll have Bumrah. So I would, batting wise, Shardul and Akshar are same. So I would go with Akshar tomorrow. If it is a full game, if the match starts on time, it's a full game, then go with Shardul. If it's before even the toss happens, there's a rain trunk, जैसे first है matches, if the overs get reduced even before the toss, even before the lineup is announced, then go with Akshar. Let's quickly get into the batting part and then we'll talk about the PAK attack and all. चैतन्य, अगर यही प्लेइंग 11 है और कहीं ना कहीं मत यही है कि अगर शुभमन गिल को आप खिलाना चाहते हैं तो स्काई को बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शुभमन को खिला रहे हैं
तो 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर ईशान किशन को खेलना पड़ेगा. Do you agree with that, or would you want Shubman to drop himself down the order, play ahead of Shreyas Iyer, and Ishan Kishan opens? आई थिंक देखो, अगर आपको ईशान को खिलाना, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज शाइन नोज एवरीबडी एंड दिस विल बी अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज व्हेन he plays against Ishan Kishan, and for Ishan Kishan also, actually both are new to each other, अगर आप देखें तो. But I think देखिए, I don't want Shubman to go down, I don't want Ishan to come and bat middle order. यहाँ पर बात क्या है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर आप देखें, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स. सो एज ए प्लेयर, एज ए मैनेजमेंट, इफ आई वांट टू पुट somebody and you want to ask somebody to adopt to the situation, these are the two batsmen which has to adopt to the situation, because these are the best batsmen we have right now. And अगर हम ईशान किशन को कोई ऐसा रोल देते हैं जिसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, और अभी वो यंगस्टर है, अभी ही हैज नॉट प्लेड टू मेनी मैचेस, ही डजंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, और ये एक बड़ा मैच है. बट अगर हम इन्हीं प्लेयर्स की बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने आपस में देखें तो अगर 500 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं ये लोग आपस में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर कुछ भी चेंज करना है बैटिंग के अंदर, तो आई थिंक दे हैव टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज टू प्लेयर्स टू टेक द टीम and gives these youngsters a chance to understand, because ये जो tournament है, वैसे tournament बहुत important है, but this tournament is very helpful for India to prepare for World Cup as well, because you're playing in subcontinent and you are playing the best teams of the subcontinent, जो subcontinent में अच्छी cricket खेलते हैं. So I think this is a very good place where you can have a practice for World Cup also. If you do a mistake, you will learn from that. But I think हमें मतलब ये mindset होना नहीं चाहिए, but कहीं ना कहीं management के पीछे thought होती है कि ठीक है यार, we can try this. बट अगर तो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपका, तो आप ये कह रहे हो कि शुभमन और ईशान को ओपन करने दो, विराट नंबर 3, रोहित नंबर 4, श्रेयस नंबर 5. I think Rohit number 3 and Virat number 4. Reason is because Virat has performed very good on 3 and little less than very good, like not good, little less than very good. He has performed on 4, so he has performed on both the numbers. So Virat is the man who can bat on both the numbers. So you are saying you would want to open with Shubman and Ishan. Yes, it will also give them a left-hander and right-hander combination. So combination और बिना प्रेशर के जाओ, बाजा क्या हो, आउट हो गए तो आउट हो गए, हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हम लोग 3 और 4 पे आएंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर आएगा. चेतन, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. What do you think? I don't agree with it. You don't agree with it? Tell me, no, why? There's no why. I mean, Rohit Sharma is an opener, Virat Kohli is number 3. With the World Cup in sight, I will not change their positions whatsoever. 2007 में मैं क्या ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट भुगत चुका है, जब आपने सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग से नंबर 4 लेकर आए थे. वी नो हाउ इट वेंट. ठीक है, सौरव गांगुली नंबर 3 पर आ रहे हैं, रॉबिन उतप्पा और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग कर रहे हैं, सौरव गांगुली नंबर 3 पे आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पे आ रहे हैं. वी ऑलरेडी सॉ हाउ इट वेंट, एंड वो भी राहुल द्रविड़ की ही बनाई हुई बिरयानी थी. तो I really don't want that. Rohit Sharma to open Asia Cup, Rohit Sharma to open in the World Cup, Virat Kohli at number 3 in Asia Cup, Virat Kohli at number 4 at number 3 in the World Cup. No number 4, no nothing. That's just my opinion. जहाँ पे Shubman Gill और ईशान किशन, there are some variables here. You already have Shreyas Iyer, उनको आपको game time देना है. If he is playing, he bats at number 4. Hardik can bat at 5 or 6. So you have the option of either opening with Ishan or making him bat at 5 or 6. Very, very simple. If Shubman plays, he opens. Yeah. He opens with Rohit. The other option is कि आप ईशान के साथ ओपन करें और स्काई को नंबर 6 पे खिलाएं. I don't want to see is कि आप शुभमन को खिला रहे हैं और आप उससे मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करा रहे हैं. हार्दिक, स्काई और श्रेयस अय्यर के होते हुए और ईशान किशन who can also bat in the middle, उसके होते हुए आप एक और मेकशिफ्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना रहे हैं. I don't want to see that. So you open, if you're playing Shubman, open with Shubman and Rohit. Ishan Kishan bats at number 5 or number 6 or number 4, depending on क्या spinner है, क्या है, जो भी है. You know, Shreyas Iyer can also bat at number 5. It's not that big a deal. So do that. If Shubman Gill is playing, if Shubman Gill is not playing, and it's not that big a deal if Shubman Gill doesn't play. जब तक KL Rahul नहीं अवेलेबल है, तब तक आप 2 मैच कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो. जहां आप इतनी बड़ी डींग फेंक कर आए हो कि आई वांट एवरीबॉडी टू बैट एवरीवेयर, देन लेट ईशान किशन ओपन एंड लेट शुभमन गिल सिट आउट फॉर 2 games, और लेट शुभमन गिल ओपन एंड लेट ईशान किशन बैट एट नंबर 5 और नंबर 6. So it's time to walk the talk. Don't change, please, for God's sake, don't change Rohit Sharma and Virat Kohli's number. They are our 2 best batsmen.
ODI cricket, white ball cricket, it's the basic funda of white ball cricket is get your best batsman to play as many deliveries as possible. हम्म What is that? चैतन्य गोपाल साहा का प्रश्न ये है कि आप क्यों ऑर्डर बदलना चाह रहे हो? व्हाई डू वांट टू चेंज इंडिया इन देयर टॉप फोर? डजंट मेक सेंस. टॉप फोर को चेंज नहीं किया है, टॉप फोर की बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं. तो लेकिन ये क्यों कर रहे हो? इट्स अ Actually, वेरी वेरी yeah. it's a very very creative thought. It's a very very radical thought. If it pays off, then brilliant. It's very clear. It reminds me of what Sri Lanka did with Kaluvitharna and Sanat Jayasuriya, with Arvind De Silva and Ranatunga, Arjuna Ranatunga dropping themselves down. It yielded them huge dividends because the rules had changed at that time, and field staying in and hitting over the top and all of that, it paid off. But then it also reminds that just because Sri Lanka executed it in '96 doesn't mean that we could execute it. We didn't do it in 2007. So वो भी सामने निकल के आता है. या फिर आज आपको लगता है परिस्थिति अलग है, माइंडसेट अलग है, प्लेयर्स अलग हैं, तो अगर करना है तो अभी करना है, वरना आप मत करो. Anand, I think the see, this is a 50 over tournament. This is not 20 over. If it was 20 over, then I would have agreed with Chetan कि आपके जो best batsmen हैं, they should play the most चैतन्य वहाँ फ्रीज हो गए. Our best batsmen should play the maximum balls is what Harsh Purohit is also saying. But if you look at the balance of the team, is there a weighty argument that Chaitanya is making, given the fact that both these players have double hundreds under their belt? They have scored at the highest level with the best of the team. Jamie Alter is also joining us. So let's try and get Jamie and get his thoughts on the playing 11 before we bring in the Pakistan conversation about it. Yeah, Chaitanya is back. So yeah, Chaitanya, yeah. make your point. Complete. Yeah, हाँ. I was just saying, as Chetan said, Chetan said कि ये मतलब बेस्ट प्लेयर्स जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको सबसे ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए. बट आई थिंक दिस इज 50 ओवर क्रिकेट. 50 ओवर क्रिकेट में देखिए, जो आपके बेस्ट बैट्समैन होते हैं ना, दे हैव टू टेक द टीम फॉरवर्ड. आप क्यों किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं कि आप आप सीनियर प्लेयर हैं, आपको टीम को लेके चलना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम. अब सोचिए, अगर केएल राहुल आपके फिट नहीं होते हैं वर्ल्ड कप में, तो आप क्या करेंगे? आपके पास यही प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है. एंड शुभमन गिल, जिसको आपने इतना इन्वेस्ट किया और जो आपको फॉर्म में दिखा है, जब जबरदस्त फॉर्म में दिखा जब वो इंडिया में खेला है, तो आई थिंक जी. आप अगर शुभमन को बाहर बिठाते तो आप उसके कॉन्फिडेंस को भी ब्रेक करते हैं. दूसरी तरफ अगर हम सूर्य को खिलाते हैं, शुभमन को बाहर बिठाते हैं, तो सूर्य भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए लगातार. तो आई थिंक वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द प्लेयर्स माइंड. आई थिंक वी नीड टू मेक देम सेटल. देखिए, हमारा केएल राहुल फिट नहीं है, ठीक है, हमारा केएल राहुल फिट नहीं है. केएल राहुल फिट नहीं होगा तो कौन आएगा? ईशान किशन आएगा. और अगर ईशान किशन आएगा तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. और ऊपर आपके पास राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनता है. एंड you can ask Ishan Kishan, go and play the best cricket you can, and then Rohit Sharma can खुल के come खेलो. number 3, and Virat Kohli is very good at number 4. He can take that responsibility. So we have this players. And श्रेयस अय्यर को भी हम देखिए, अगर आप क्या करते हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट को ऊपर खिलाते हैं, और शाहीन अफरीदी बाई चांस या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स या कोई भी बॉलिंग अटैक उनको पहले 5 ओवर में 2 आउट कर लेता है, तो आपकी बैटिंग सोचिए, सिर्फ विराट रह जाएंगे जो कि बेस्ट फॉर्म में है. उसके बाद श्रेयस अय्यर के पास इतनी ज्यादा अभी मैच प्रैक्टिस नहीं है. ईशान किशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उस नंबर पे आप उसको कुछ कहना नहीं चाहते हैं. रह गए फिर आपके पास हार्दिक पांड्या, जो कि खुद भी बहुत ब्रिलियंट फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं. मतलब वो वैसे वाले हार्दिक नहीं दिख रहे जो आज से कुछ साल पहले दिख रहे थे. तो आप देखेंगे तो आपकी बैटिंग में कहीं ना कहीं वो कमी दिखाई देनी शुरू होगी. कहीं ना कहीं वो माइंड थॉट के अंदर वो एक नेगेटिव प्ले रहेगा कि यार मुझे पहले सेट होना है, उसके बाद आई विल फर्स्ट ही वांट्स टू प्ले फॉर हिमसेल्फ एंड देन ही विल प्ले फॉर द टीम. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट. You ask your two main players to take the team forward and ask these youngsters to adjust themselves. Yeah, we are actually making this contest between the Pakistan bowlers versus the Indian batters, because bulk of the discussion so far has been around the Indian batting, Jamie. But the Pakistan team, somewhere one gets the sense this could also turn out to be a contest between the Indian bowlers and the Pak batsmen. Given what we saw against Nepal, Babar Azam has got 100 under his belt. You got Iftikhar getting 100 under his belt. Rizwan got some runs. So, but Gopal Sai is saying now our viewers are really getting into this conversation that according to Chaitanya, just to accommodate one batsman, you have to change our whole batting order and roles. But the point is, let's try, and I'm going to request our team if they can at the back end who are making the graphics, if they can put the same playing 11, probable playing 11 of India
in the order that Chaitanya mentioned. And then let's look at that construct and see, does that look a little more robust than it looks in its current form or the way it is written? Jamie, where do you stand before I get into the Pakistan team itself? If you Hmm. pull up their probables, you think this is the probable 11, that if Ishan has to come in, that means Surya Kumar goes out, Rohit and Shubman open, Virat number 3, Shreyas number 4, Ishan number 5, Hardik Ravindra Jadeja? Or would you lean towards Chaitanya, who says that if Ishan comes in, let Shubman and Ishan open, let Rohit come in at number 3, Virat drops himself to 4, and then you have a lower order that looks far more robust. Even in the bowling, Chetan said that if we have a truncated affair, then it should be Aksar and not Shardul. But if we have a full 50 over game, then it should be Shardul and not Aksar. Yeah, go ahead. Yeah, so I have the same 11 players. My only thing is that look, Shubman Gill has not played Pakistan, Ishan Kishan has not played Pakistan, right? So in a match like this, you are 100% dependent on the two most experienced players जिनके पास बहुत सफलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली. The last time these two teams played a one-day match was in 2019 मैनचेस्टर. रोहित शर्मा ने मैच सेटिंग 100 बनाया था. इनके आंकड़े अच्छे हैं, विराट के आंकड़े बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट. तो अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप आई वुड नेवर वांट टू सी रोहित एंड विराट शिफ्टेड फ्रॉम वेयर दे बैटेड. यानी कि रोहित ओपनिंग और सिर्फ ओपनिंग करेंगे, विराट सिर्फ और सिर्फ टीम पे खेलेंगे. शुभमन गिल लाइक चेतन यू वर सेइंग व्हेन आई जॉइंड, आपने उनको एक रोल के लिए ग्रूम किया, व्हाई वुड यू मूव हिम फ्रॉम दैट, राइट? हाँ, इनके पिछले 2-2.5 महीने खराब हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही इज बीन योर लीडिंग रन गेटर. ही इज गॉट लाइक 700 रन्स इन इंडिया दिस ईयर. तो टू मी इट्स अ नो ब्रेनर, ही हैज टू बैट. एंड बिकॉज श्रेयस अय्यर पिछले 2 साल में आपके सबसे सफल नंबर 4 हैं, वो भी 4 पे खेलेंगे. तो मेरे हिसाब से ये 4 जगह ये नॉन नेगोशियबल है, ये लॉक थे. अब अफसोस की बात है कि केएल राहुल नहीं है, तो ईशान किशन आते हैं. ईशान किशन अगर आएंगे तो लाइक चेतन आई डिस्कसिंग, वो या तो 5 पे आते हैं या 6 पे. हार्दिक पांड्या टू माय माइंड इज अ बेटर नंबर 5, लेकिन लाइक चेतन ने सेड अभी उनका कुछ खास फॉर्म नहीं है. तो मेरे लिए 5-6 में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जडेजा बैट्स एट नंबर 7, राइट? नाउ लाइक चेतन एंड आई वर डिस्कसिंग ऑन अनदर शो दिस आफ्टरनून, अगर कंडीशन डैम्प है, अगर बारिश वाकई में आने वाला है, देन यू हैव टू सी कि आपका वो ऑलराउंडर कौन है. अगर कल के जैसे पिच बिल्कुल स्लो ड्राई लो रहा, then yes, then Akshay Patel comes in. If it's going to be seamy, if it's going to be wet, then you need, in my book, you need Shardul Thakur. Baki, I don't see any change in this 11. In this 11, so overall we are ready, we're okay with the construct of the 11, but the orders is where there is a differing point of view. Anand, Yes, Chaitanya, yeah, and I then we'll just bring in want to, Pakistan. I just want to add here. See, as Jamie and Chetan is saying, wicket is slow, okay? And if our हमारे ओपनर्स आउट हो जाते हैं, ऊपर के प्लेयर आउट हो जाते हैं और विकेट स्लो होता जाता है, तो यू थिंक ईशान किशन कैन कम एंड डू गुड एट नंबर 6 और 7, और ही कैन डू वेल एट ओपनिंग. आपके सबसे सीनियर प्लेयर जो हैं वो रोहित शर्मा हैं और विराट कोहली. ये 500 मैच खेल चुके हैं. They know how to bat on different kind of conditions and different kind of bowlers. They can take the team along. This wicket is not of 300. Understand, this is a wicket of where you will score 260, 270, good score. And when you talk about playing Akshar on this wicket, Akshar can bowl according to one speed. He doesn't have 2-3 speeds. But this wicket is double pace. So when you play Shardul, that double pace, that stickiness comes into the play. If you see yesterday, their fast bowlers were doing good when they were bowling, slower balls. So I Yeah. think अगर हमारे पास अक्षर की जगह अश्विन होता तो मैं बोलता कि अश्विन को खिलाओ, because yes, अश्विन can bowl on different speeds, but अक्षर doesn't have different speeds. अक्षर का बॉल भी 80-90 के आसपास चलता है, तो he will also come good on the bat. आई थिंक हमारे पास जडेजा और अक्षर दोनों एक जैसे बॉलर हो जाते हैं. तभी मैं बोल रहा था कि इंडियन बॉलिंग के अंदर 18 लोगों के बाद भी हमारे पास स्पिन के अंदर ऑप्शंस नहीं है. हम स्पिन में स्ट्रगल करेंगे क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. इस प्लेइंग 11 में अगर हम देखें शार्दुल के साथ वी हैव 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस and we also have 2 spin options in Ravindra Jadeja and Kuldeep. So it looks a little more balanced. Now we'll see how the weather conditions are. Now let's quickly bring in Pakistan. Now where do you see this contest between the Indian bowlers and the and Pak batsmen, or vice versa? That means the Pak bowlers and the Indian batsmen. Or do you believe that all angles or all aspects are going to come into play in this match? Because
if I were to see this order on form and how they have displayed themselves, they perform themselves, all the players seem to be in good nick. Agha Aslam may have had a very off day the other day, जल्दी out हो गया, लेकिन इसमें सौद शकील comes back in, but that उसको तो काफी talented बता रहे हैं लोग, जो उस दिन तो वो नेपाल के खिलाफ तो जल्दी out हो गया था. हाँ, so let's start with Chetan. So in a game like this, you can't just say ki is it against the batsmen or the bowlers. I mean, Indian batsmen will have to contend with Pakistan bowlers, and same thing. Pakistan batting was the Nepal ke against the top order struggle. So India's bowling is a better bowling attack, and India actually knows how to bowl in the second part of the innings. नेपाल जोश में थे पहले 25 ओवर में, इसीलिए पाकिस्तान को ऐसे कर दिया उन्होंने. But they did not know how to carry on for the next 25 overs because they did not have the experience, they did not have the know-how. They did not know how to bowl to somebody like a Babar Azam when he's in full flow. India has done that so many times to so many batsmen. So it's not like, and India has a far better quality of bowling attack than Nepal did. So ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का मैच है. नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग का भी उतना ही बड़ा मैचअप है. Especially if it's a truncated game, if it's a shortened game, then तो it becomes even More better in intense, that. But मैं यहाँ पे मतलब चैतन्य की बात से मैं क्यों डिफर कर रहा हूँ, because it's not about just this one game. It's not just about this one game. It does not matter if India loses tomorrow. It's not the end of the world. जो गोल है वो अक्टूबर नवंबर में है. मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर इंडिया एशिया कप भी नहीं जीती है, that's also not a big deal. फाइनल में नहीं पहुंचे, then it's a big deal because जो भी बाकी टीम्स हैं, they are not that great. But the focus of this Asia Cup is to get your 11 right, get your क्या आप करना चाहते हो, get that right. रोहित शर्मा अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं एनीबडी कैन बैट एनीवेयर, तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि ईशान किशन जो है वो ओपनिंग में ही अच्छे हैं और वो मिडिल ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. जहां पे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और वहां पे ईशान किशन को डर रहे हो आप मिडिल ऑर्डर में खिलाने से. दूसरी चीज, अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही हमारे इतने बड़े बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान के बॉलर्स का सामना कर सकते हैं, तो भैया फिर तो वर्ल्ड कप आप हो चुका आपका. आप कह रहे हो कि ठीक है, मे बी द फॉर्म इज नॉट दैट ग्रेट, बट आर यू सेइंग, मतलब I'm not pointing any. But taking your own argument, Chetan, taking your own argument, if Rohit Sharma is saying anybody can bat anywhere, so why can't Rohit bat at number 3 and Virat bat at number 4 if that gives you a far more settled batting order and a lot more depth? Let's start with Jasprit Bumrah. Let Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj open, and then Rohit Sharma and Virat Kohli. But that's arguing for arguing sake. No, both Ishan Kishan and Shubman Gill. कोई भी कर सकता है. Both Ishan Kishan and Shubman Gill have got double hundreds in ODIs. They are not some Rohit Sharma has 3 double hundreds in ODIs. So that's why, and they have the experience. Point is that if these two have done well at the top of the order, why can't they? I'm just saying, if you were to take the argument of anybody can bat anywhere, that applies to Rohit and Virat also as much as it applies to Ishan Kishan and Shubman Gill. That's what I'm trying to say. It does. But आप ये देखो कि वो क्वेश्चन और वो जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था. वो क्वेश्चन और वो जवाब इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था कि आपके पास ब्लैंक्स हैं आपके बैटिंग ऑर्डर में, यू नीड टू फिल दोज ब्लैंक्स. फिलिंग ब्लैंक्स डज नॉट मीन कि आपके पास जो ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई हैं आप उसी को तहस नहस करते चले जाओ. So at the end of the day, are you saying just because Ishan Kishan and Shubman Gill have double hundreds in recent times और उनके पास ओपनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप पूरा बैटिंग ऑर्डर उस चक्कर में चेंज कर दोगे? श्रेयस अय्यर पूरा ही चेंज हो रहा है. आप पूरा कहाँ चेंज कर रहे हो? पूरा ही चेंज हो रहा है. ईशान किशन, शुभमन गिल ओपन, so Rohit Sharma 3, Virat Kohli 4, Shreyas Iyer at 5. These are your 3 main batsmen who've been batting at 2, 3, 4. और जहां पे हम विराट कोहली की इतनी बात कर रहे हैं, नंबर 4 कब बैटिंग किया वो? 2010-11 में. It's been 10 years since he's batted at number 4. He didn't forget to bat. Chetan, he didn't forget to bat. He did not forget to bat, but his form is not that great. It's a 50-over cricket. It's a 50-over cricket. You need to understand. His form is not that great. His form is not that great. He's then coming why into do you want him to bat number 3? No. So are you making a case for him to play at number 3, or are you trying to say that his form is not that great, so you got to protect him? I am saying कि वो उसने जो 40 innings number 4 पे खेली हैं, that is not a good record to look at, because A, it happened 10 years ago. B, because Virat Kohli was a very different batsman at that time. He's not the same batsman anymore, irrespective of his mind frame, irrespective of his form. He's not the same batsman anymore. You have a Shreyas Iyer who's suited to that role, who's coming back from injury. सारा रायता फैला के आप कह रहे हो थोड़ा रायता और फैलाते हैं.
सर आप रायते को इकट्ठा नहीं कर रहे, आप रायते को और लपेट रहे हो। आप समझिए, आप 4-5 पे कुछ नहीं होता। आपके यहाँ पे 300 बॉलें खेलनी है, आपको 200 बॉलें नहीं खेलनी। आपने 4 नंबर पे कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगाया कि मैं 4 पे ही खेलूंगा। आप 20 ओवर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है। आप एकदम से आप नहीं डाल सकते शाहीन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। शाहीन अफरीदी को अगर आप देखें तो बहुत ही, अगर आप उसकी बात करें तो वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल बॉलर है। वो शुरू में नई बॉल को बिल्कुल मुंह पे फेंकता है। और कल भी अगर आप देखें नेपाल में भी उसने वही ट्राई किया। हर मैच में ही ट्राइज टू इन स्विंग एंड बोल वेरी क्लोज टू द बॉडी एंड ट्राई टू गेट बोल्ड और एलबीडब्ल्यू। सो आई एम नॉट सेइंग, बट दिस इज क्रिकेट। एज ए मैनेजमेंट, अगर मैं अपने घर में भी अगर मैं सबसे बड़ा हूं, सो आई विल गो एंड फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। आई विल नॉट सेंड माय यंगर बॉय और यंगर पर्सन ऑफ माय फैमिली टू गो एंड जस्ट आई विल थ्रो हिम आउट। ऐसे नहीं होता है। ये बच्चे हैं, इनको हमें साथ लेकर चलना होगा। ये बच्चे ही हैं, ये बच्चे ही हैं। अभी हमारे पास अगर केएल राहुल होता पर चैतन्य, तो जो नहीं पर एक मिनट, पर चैतन्य जो लॉजिक आप इसके साथ श्रेयस अय्यर के साथ लगा रहे हो, वही लॉजिक आपको फिर ईशान किशन और शार्दुल के साथ लगा, सॉरी शुभमन के साथ लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ईशान किशन है, ईशान किशन आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। केएल राहुल आपकी फर्स्ट चॉइस था, बट अब आपको उसको टीम में लाना पड़ रहा है, और वो जिस जगह पे कंफर्टेबल आप उसको वहीं खिलाएंगे, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा है जो 3 नंबर भी बैटिंग कर सकता है, विराट भी 4 नंबर बैटिंग कर सकता है, लेकिन ईशान किशन 6-7 नंबर पे उस तरीके की बैटिंग नहीं करता है। और और हम जब क्रिकेट खेलते हैं, जब हम आनंद क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम इस तरीके से नहीं खेलते कि मैं हर मैच में उसी तरीके से खेलूंगा। मैं विकेट के अकॉर्डिंग खेलता हूँ, मैं टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खेलता हूँ। अगर विकेट स्लो है तो मुझे बॉल की लाइन चेंज करनी पड़ेगी, मुझे बॉल की लाइन अंदर बाहर करनी पड़ेगी, स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर ईशान किशन जो बैट पे बॉल आना पसंद करता है, उसको अगर आप 7 नंबर बैटिंग कराओगे, देन ही विल बी इन ट्रबल। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द विकेट। आई अंडरस्टैंड, अगर यही मैच हम सौराष्ट्र में खेल रहे हैं या यही मैच हम दिल्ली की विकेट पे खेल रहे हैं, तो आई विल से ठीक है, आप रोहित को भेजो बिकॉज इट्स सुपर विकेट। आई डोंट थिंक दैट द न्यू बॉल विल मेक एनी वरी, और नीचे भी बॉल बैट पे अच्छा आने वाला है, तो ही कैन डू। So according to the situation, according to the ground, according to the wicket, lot of things changes in cricket. We cannot just stick to the same thing. चलिए, अच्छा, ईशान विल प्ले अ टफर स्पेल अगेंस्ट शाहीन एंड नसीम। हर से एक चीज है कि इस टीम में जो भी प्लेयर है, हम लोग आर्गुमेंट के लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं, बट एवरीबडी इज प्ले माइंडसेट ऐसी है कि दे विल प्ले एवरी बॉलर एट एनी पॉइंट इन टाइम। और आपकी बात तो शाहीन शाह अफरीदी हो, हाजिर रौफ हो या नसीम हो या जो भी हो, सबके पास 10-10 ओवर है खेलने के लिए। तो शुरू के 3 ओवर खेल के रुक भी सकता है, बाद में भी आगे बॉलिंग कर सकता है। तो कभी भी जब कोई भी बैटिंग करने आएगा तब उसको वो खेलना पड़ेगा उसको। नहीं, I just don't understand this. ये कमेंट आया है कि he'll play a tougher spell, मतलब वो 10 के 10 ओवर शुरू में ही करा देंगे, पहले ही वो स्टार्ट में वही करा देंगे। थोड़ा लॉजिक इज दैट। तो मैं वही कह रहा हूं कि टफर 4 ओवर्स एंड then come back to ball 6 overs. So वो कभी 2 ओवर के बाद हां, it doesn't work. That's what I was trying to say. It doesn't work. जेमी, फाइनल कमेंट। 7 बज गए, देखिए पाकिस्तान तक हम पहुंचे नहीं है। इंडियन टीम पे रुके हैं। चलो पाकिस्तान पे बात करेंगे। But let's go. Let's say final word. Now from the Pakistan side, do you see or is it all about how settled India looks? It's not as much as how Pakistan come and bowl, but it's all how settled India feel as a team, that's going to drive the result tomorrow. Do you get that? I mean, if you compare the team, तो मेरे हिसाब से दोनों टीम में जमीन आसमान का फर्क है. This is the most settled Pakistan team I've ever seen, and this is one of the most unsettled Indian teams I've seen. So for me, the tournament favorites outright are Pakistan, right? You made such a big statement. So you disagree with Hayden? I didn't see what he said. India have the more classier batting lineup, and he says. Yeah, but he's an employee of the PCB also, na? He's a PCB employee, so वो बोलेगा ही ऐसा. I'm not going to give him anything. Matthew Hayden has been with the Pakistan team for the last year now as batting consultant. तो वो बोलेगा ही ऐसा. He's calling India the more classier batting lineup, भाई. Yes. That was not mind game. Where his loyalty lies, we all know. वो चेन्नई वाले दिन इसके गए, अब इसका दिन हरा हो गया. So he's playing the mind game. Frankly, I couldn't care what he said. Hayden the non-batsman is a joke to me. But point ये है कि खतरे की निशानी ये है कि जहां हम अभी तक 11 ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. बुमराह 1 साल के बाद वनडे मैच खेलेंगे, केएल राहुल 5 मैच के बाद खेलेंगे. विराट कोहली का आखिरी वनडे मैच कब था किसी को याद है? मार्च के महीने में. रोहित शर्मा का 30+ स्कोर कब था? फेब के महीने में. और यहां बाबर आजम 150 मार के आ रहे हैं. इफ्तिकार. सो माय थिंग इज ऑन द डे, कल कोई
फुद्दू वाला पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन सेटल की बात करें, पाकिस्तान इज 99% सेटल। इनका 1% डाउट ये कि शाहीन अफरीदी फिट है कि नहीं। यहां हमारे हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट, अरे रोहित शर्मा बैटिंग, सो वी आर सो कंफ्यूज्ड, थैंक्स इन नो स्मॉल पार्ट टू हाउ बैड दिस रोहित राहुल द्रविड़ कॉम्बिनेशन हैज बीन। तो इफ यू वांट सेटल्ड, इट्स पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान टीम अभी 3 मैच खेल के आई श्रीलंका में, दे बीट अफगानिस्तान। तो आई डोंट नो, आई होप ऑल द गॉड्स इन द वर्ल्ड और विद द इंडियन टीम, मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ा मुश्किल मैच होगा ये। हालांकि जीत तो बारिश की होगी एंड में। जीत तो बारिश की होगी क्या? 91% बारिश। No, that's fine, but I want an end to this debate. I at least hope कि toss हो जाए and we know the batting lineup, because this is. Yeah. It is the worst Indian preparation, Chetan, since 2003 going into any World Cup. Yeah, Worst. I think it's going to be a conversation point, because even when the numbers, and I'll tell you, I'll plug in stats chat here, but the numbers also show that this team is not only perhaps on an average age the oldest in a decade since 2011 that we are sending, but also perhaps the most inexperienced, with the most inexperienced captain that we've ever sent to a World Cup in the last 12 to 14 years. So there are a lot of points there which India has to surmount. Somewhere the expectations are not very high in my head. For me, if they turn out settled and if they have a plan in place, I'm looking for the plan. That's what I'm doing. If India don't lose wickets in the first spell, PAK team has conceded even 400, India can dominate this attack. Great Sarvesh, I love that confidence. My point is, first let India decide its playing 11 and it decide its batting order. Then uske baad next step. But for the moment, on that note, lovely speaking with all of you. Time कैसे निकलता समझ में नहीं आता यार. Thank you so much. Bye. See you. Take care. Bye. Fastest cricket score updates या सबसे detailed stats क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या healthy debates सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।